So good evening, everyone. And I welcome all of you to this 15th episode of our monthly series, Meet the Alumni. Today, we have a very distinguished alumni amongst us, Engineer Shri Aashish Chandorkar. So, Ashish ji, I welcome you to this episode. Thank you for joining. Ashish ji is currently the counselor at the Permanent Mission of India to World Trade Organization, Geneva. It's a very pride thing for the college that he is the first ever person from the private sector to be appointed at this position. So that's a great achievement in itself, and we are proud that you are a fellow Succarian. I would also say that it's a kind of a fanboy moment for me because I have been watching many of your videos in the past. I have seen you on a lot of YouTube channels like Bharat Varta, Stat News Global, Swaraj, and I have seen you a lot. I have read about you, but I never knew that you were a fellow Succarian. So when Vikas sir told me that you are from 1998 batch, it was a great surprise for me and a very good feeling. So thank you for joining. Before we start, I will invite the president of our association, Engineer Shri Sandeep Counsellor sir, to give his opening remarks. Good evening, everyone. A very warm welcome on behalf of SGSITS Alumni Association. This webinar series has been our regular feature for last year and a half. In this, we have showcased alumni from different walks of life, right from a marathon runner to technical experts to social activists like Engineer Harsh Chauhan. So in this series today, we have a expert from public policy. I hope everyone enjoys it. I won't take much time. So would like to listen to Engineer Aashish Chandorkar. Carry on, Aashish. Thank you, sir. So before we move ahead, I'll just invite Engineer Shri Vikas Modi to formally introduce our speaker for the evening, Ashish ji, and also tell us that how Vikas ji met Ashish sir first time. Yes, Vikas sir, over to you. Yeah, hello everyone, and welcome Ashish. Thank you. I read about Ashish when I was reading about that the first non-government counselor was appointed by the government, and I was just looking at his profile and came to know that he's a fellow Succarian. That's how, and then I approached him over LinkedIn and then over the mail, and then he agreed to come as a speaker for the webinar. So once again, welcome. Let me introduce Ashish to you. Ashish is from 1998 batch electronics and telecommunication, and he went on to do his post-graduation from IIM Calcutta in 2000. After his IIM, he worked in the corporate sector like Capgemini and all these companies, and he's handles I think Vikas ji has lost his connection. So I'll just tell more about Ashish ji. So after graduating from GSITS in the year 1998, he went on to do his post-graduation from IIM Calcutta, and he has a long and rich experience of working in several multinational consultancies. He is one of the leading public policy commentator, and prior to this current responsibility that he is heading at as a counselor at WTO, he was also the director at a Bengaluru-based think tank, SMAHI Foundation of Policy and Research, which he also co-founded. He is a prolific writer, and he writes on multiple platforms, and he is very active on Twitter also, and his tweets are quite informative. I have been following his tweets for the past 1 week, so they are quite informative and they give a good insight. I must say that the Prime Minister of India is his follower, so on Twitter. So you can imagine what fan following he has on the Twitter.
So it's great to have you, sir. I think we should straight away start with our conversation. So this will be an impromptu conversation that we will have, and we will try to understand more about what you do, what have been your key experiences and your journey so far. This we are also broadcasting live on YouTube, so people are have joined on the YouTube channel as well. So Ashish ji, as I understand, you graduated in the year 1998. तो उसके बाद, if you could just tell us about your journey so far. Sure. Firstly, thanks Ashutosh for inviting me, and thanks to Sandeep sir and Vikas sir for really taking the pains to contact me on LinkedIn and getting involved in this association. I mean, actually, it's a bit of a shame that I was not aware of the wonderful activities all of you have been doing. So it's good to kind of reconnect. I also see my favorite professor from the college times, Professor Apur Gavag, on the call. So hello, sir. It's so good to see you here. And you perhaps have another, I don't know if you've already spoken to Rajiv Nema, but the star. Yeah, we have. The brand ambassador of Poha and Indore is on the call as well. So hi, Rajiv. So Ashutosh, I mean, I completed my engineering in 98. Straight away went for my MBA to IIM Calcutta. In fact, जिस दिन मेरा आखिरी practical था, उसके अगले दिन मैंने IIM Calcutta join किया था. मतलब basically it was, I mean, काफी लोग experience साथ जाते हैं. मतलब I had like about a 8-10 hour gap to move from graduation to post graduation. So I completed that in 2000, then joined a US based company called Ionotics. Okay. So 2001 I was in the US. It was a very fateful year, not just for me but for the world as a whole, when 9/11 happened. Yeah. मैं actually उस time New York में था. Actually I saw that live. I actually missed being in WTC, thankfully, that morning. So I saw much of that event live myself. But उसके बाद मेरी company बंद हो गई थी, जो मतलब जिस division में मैं काम करता था. So I lost my job. It was pretty painful to lose your first job. But जब job लगा था तो बड़ा उसका fanfare वो था कि अरे US job, campus placement, ये सब IIM Calcutta से. लेकिन then I lost my job after a year. So I came back to India and then I joined Citibank. तो Citigroup में I was there for a bit. वो company भी मतलब actually एक subsidiary थी तो वो भी बंद हो गई बाद में, एक साल के बाद. तो I had like 2 really bad starts to my career. Yeah. And then I then went to Standard Chartered Bank का जो IT division था. I worked there for a while. And then I moved to Pune in 2004 with Cognizant. I spent 9 years in Pune, working on starting several consulting practices. So, I mean, I had joined there as a business analyst, but all the IT companies were trying to move from IT into consulting at that point of time. So I was lucky to actually head, to let's say start 2 new businesses in Cognizant, and I headed one of them. So I headed like for the last 2 years, I was running a business. And then uske baad I was with Capgemini for 8 years, starting 2013. So although मैं पुणे based था, but job मुंबई में था, तो I kept shuttling between Pune and Mumbai. I mean, Express became my home, basically second home. तो हर हफ्ते 2 बार 3 बार पुणे मुंबई हो जाता था actually. So it was 8 years I did that, and मतलब by 2018-19 the corporate life had become, I mean, all say consulting में कैसा होता है, you are traveling all the time, right? Like मैं तो वैसे भी पुणे में था, ऑफिस मुंबई में था, but एक टीम बैंगलोर में थी, एक टीम दिल्ली में थी, clients were in Europe most of the times. So I was kind of totally totally tired of traveling basically. मतलब एक टाइम पे ऐसा लगा कि मतलब Europe, I myself traveled to Europe 40-50 times. I don't know. I've lost count. वीजा भरने के टाइम बड़ा पेनफुल होता है जब वो पुरानी डेट्स निकाल के देखना पड़ता है कि आप कब कहाँ ट्रैवल किया था. तो I got so tired of traveling कि I decided कि मैं I will just quit and then start something on my own. तो मैंने 2018 onwards I had started to set up some businesses. I set up a digital marketing company called Yogasmita. Then also set up a podcast called Bharat Varta. And then of course I set up a think tank called Smahi Foundation. तो वो तीनों चीजों में इन्वॉल्व था. But then COVID happened. तो COVID का फायदा ये हुआ कि आप
4 जॉब एक साथ कर सकते थे क्योंकि घर पे बैठे हुए थे, तो Capgemini +3 continued to work. But the downside was that you know I mean, it was very painful to really work through the day, and because I had clients from Australia till the West Coast, so it became kind of difficult to manage. So I was anyway going to quit, and then this offer came. I mean, we'll talk more about that in terms of the public policy work in the last 7-8 years. But then someone reached out to me asking if I was interested in this role, and then of course I said yes. It's a matter of great honor and privilege to represent the country at a global forum. So I said yes, and I joined here in September 2021. So it's been about 7.5 months now. 7 months, yeah. Yeah, I will ask you some more things about that. But just on, I was just curious that how did this switch happen? Because you were in a regular corporate job. And how did you get interested in this public policy formulation or working with the government department? How did this thing happen? Yeah. So a couple of things, a couple of impulses, Ashutosh. So one is, like, एक तो जब ट्विटर चालू हुआ इंडिया में 2008-9 में जब पिकअप हुआ, तो आई वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द अर्लिएस्ट यूजर्स ऑफ ट्विटर. तो मैं काफी टाइम से सोशल मीडिया पे था, तो एक इनिशियल एक इंटरेस्ट जाग गया था ऑन पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि ट्विटर पे तब ये बहुत सारा चलता रहता था अबाउट पॉलिसी, एंड पीपल यूज्ड टू डिस्कस थिंग्स. Unfortunately for the country, like 2008-9, those were difficult times geopolitically, security wise. Then of course बाद में फिर economic situation became a little bad towards 2012-13. तो बहुत सारा debate होता था social media के ऊपर on public policy वगैरह. So I was involved. I mean, I started taking interest in that topic through that route. Professional side पे I was in cognizant and I was fairly stable. तो वो भी एक था कि एक जो early stage career में जो भागदौड़ होती है और जब सब टाइम नहीं मिलता उतना concentrate करने के लिए, तो पुणे में मतलब I had settled down in Pune. I had bought a house. Time was okay. Professional life was study. So it kind of it just became like my passion and my, let's say, second interest outside of my profession. And Pune also is a very rich city in terms of history, right? In a way, it was like the capital of the country for a bit in the 18th almost 70-80 years, yeah. So Pune, I met a lot of historians. Pune is a very active city in terms of debate and discussion and a lot of these, let's say, history definitely. So I met a few very interesting people in Pune. तो वहां से थोड़ा हिस्ट्री वाला एक वो हुआ, मतलब हिस्ट्री आई यूज्ड टू रीड एनीवे, बट एक थोड़ा मतलब इट काइंड ऑफ रीकिंडल्ड माय इंटरेस्ट. तो फिर वो सब एक जुड़ता गया एंड आई बेसिकली स्टार्ट राइटिंग ऑन पब्लिक पॉलिसी इन अबाउट 2013-14 व्हेन आई यूज्ड टू राइट इन प्रेस. तो वहां से इंटरेस्ट बढ़ता रहा मेरा. एंड देन ऑफ कोर्स 2014 में व्हेन द पॉलिटिकल चेंजेस हैपेंड इन द कंट्री, 14-15, a lot of the professionals joined politics, mainly with BJP and with AAP. Those two parties, right? AAP and Delhi and BJP centrally. So a lot of people, well, not a lot of people, but some of the people that I knew from professional circles actually became professional politicians. A lot of people had got interested, and then some actually took the plunge full time कि हम full time यही करेंगे. तो एक general connect भी था कुछ लोगों से, और तो it kind of led to one thing, led to another. Since I was writing, so people used to reach out to me for my views and comments on different things. Also giving feedback on government policies in terms of, let's say, कुछ law बन रहा है उसके ऊपर public consultation चल रहा है, तो can some feedback be given, can some industry conversation be arranged with the stakeholders. तो उस तरह की activities में मैं involved था. It was all basically personal passion. There was no professional angle to this, क्योंकि although मैं consulting में था, I mean I was heading the consulting business in Capgemini, but Capgemini was not working in the government as a sector in India. तो वो एक तरह से अच्छा भी था मेरे लिए, बिकॉज मैं पर्सनली वो मतलब इट वाज लाइक अ पैशन, तो उसमें कुछ ओवरलैप नहीं था, तो इट वाज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देयर एज सच, क्योंकि मैं अपना मतलब काम अलग था और ये अलग था. सो इट वेंट ऑन फॉर अ व्हाइल. तो बस क्या, तो उसी से मैं इंटरेस्टेड रहा. बाद में मतलब टुवर्ड्स इन 2021 आई यूज्ड टू हैव अ कॉलम इन ब्लूमबर्ग, व्हिच इज द लार्जेस्ट op-ed प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड. तो वो एक्चुअली बंद हो गया बिकॉज आई जॉइंड द गवर्नमेंट, दे रिफ्यूज्ड टू कंटिन्यू बिकॉज दे सेड दैट they don't want a government voice on the platform. But
बट बेसिकली काफी जगह मतलब मैंने इकोनॉमी, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं टॉपिक्स में लिखता रहा काफी टाइम से. So that continued, and yeah, I mean that was a journey basically on the public policy side, which was like a parallel journey to my professional life. Right. So before we go ahead, I was watching a lot of blogs and lot of articles on you where you say that there are 3 P's in your life. So one is policy, politics, and pohe. So as a Indori, before I move ahead, I must ask कि किस टाइप के पोहे खाना पसंद है आपको? मतलब मुझे बिल्कुल इंदौर वैरायटी के पोहे, मतलब एक्चुअली पुणे में दिस इज अ बिग डिबेट कि who owns poha, right? पोहा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो obviously I stand my ground कि भाई it's a MP dish. इनफैक्ट जब जिनीवा में आया तो सामान भी आया था शिप में, तो पोहे भी आए, मतलब एक सवा साल तो चली जाएंगे जितने पोहे आए. मतलब हर हफ्ते भी खाए, तो whole bunch of bunch of packets have come from Pune. Yes, true. जीरावन आया कि नहीं उसमें? जीरावन खत्म हो गया एक्चुअली. वो जीरावन टिकता नहीं इतने टाइम तक, मतलब तो अभी आएगा. मतलब वो जब भी आता है तो फिर एक फ्रेश थॉट, फ्रेश रिफ्रेशिंग होता है. So आपका अभी करंट रोल क्या है एज अ काउंसलर? व्हाट आर योर करंट रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज एट WTO दैट यू आर हैंडलिंग? So let me first explain what WTO does. क्योंकि before I come to my role, let me explain what is WTO, because वो भी एक नया टॉपिक होगा काफी लोगों को. Yes. तो see, जैसे I mean I'll go right back to World War II. उसके बाद जब ग्लोबल ऑर्डर पूरा चेंज हुआ तो ये सब ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस बने, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी के लिए. तो उनका काम ये था कि भाई वो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग पे ध्यान देंगे देशों के, कि भी किसी देश को कोई समस्या है तो दे विल फंड ऑल ऑफ दैट. ट्रेड को लेके कोई बॉडी नहीं थी उस टाइम पे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT. तो गैट जो था वो 1948 में बना, एंड इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दैट. तो of course India was a founding member because British influence था just after independence. Both India and Pakistan were founding members of GATT actually उस समय. तो GATT kind of ran for a while, but बाद में ऐसा लगा देशों को कि भाई जैसे जैसे दुनिया बदलती रही through the 70s 80s especially, there were waves of globalization. पहले globalization बढ़ा कम हुआ, मतलब there were other issues, geopolitical problems, Cold War happened. So through the changes which happened in the next 40 years, for next let's say 35 years, countries realized that उनका interests जो था वो, उनके interests जो थे वो GATT में पूरे fulfill नहीं हो रहे थे, trade interests जो थे and the control they had, it became like a organization dominated by developed countries. तो इसलिए 1986 से एक discussion चालू हुआ, उसको उरुग्वे राउंड डिस्कशन बोलते हैं. तो 86 to 94 वो डिस्कशन चला और उसके बाद में GATT बनाया गया. इनफैक्ट जो लोग, मतलब आप लोगों में से काफी लोगों ने, आपको एक नाम याद होगा, आर्थर डंकल करके, डंकल प्रपोजल करके वो चलता था मीडिया में, बहुत उसका डिस्कशन होता था जब हम छोटे थे. तो वो आया करता था कि आर्थर डंकल वाज द हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे. ही वाज द मेन, लाइक से द मेन पर्सन रिस्पांसिबल टू फॉर्मुलेट द रूल्स ऑफ WTO. तो 94 में WTO, मतलब 95 में इट बिकेम ऑपरेटिव, Jan 95 में. So again India was like a founding member of WTO. तो हर कंट्री का, तो बेसिकली क्या WTO does has got 4 functions. One is that जो ट्रेड पॉलिसी, ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी होती है जिसमें सारे देश उसमें उसको एंडोर्स करते हैं, they kind of abide by that policy. So that policies are made by WTO, and it is also I mean, so one is negotiation function, but there's also the monitoring function कि आपने जो साइन किया है, whatever you agreed to, are countries fulfilling those commitments or doing what they said they will do. तो एक तो वो था कि so there's a negotiation function, नए rules बनाने के लिए. there's also the monitoring function. There is also called the development function, which is कि जो देश कमजोर देश हैं, छोटे देश हैं, जिनकी इकोनॉमी बड़ी नहीं है, how can they benefit from trade? So this is another area. And then the fourth function is called dispute settlement, कि भाई दो देशों के बीच यदि कुछ झगड़ा होता है या कुछ if they find that
जो laws हैं वो fulfill apply नहीं हुए हैं in between two countries. So they can use the dispute settlement mechanism of WTO to solve these problems. तो इस तरह से 4 functions हैं: negotiation, monitoring, development and dispute settlement. तो उसमें अब हर देश, जितने भी देश उसके मेंबर हैं, currently there are 164 members. तो every country maintains a permanent mission in WTO, to WTO rather, which is based in Geneva. तो सारे देशों के का एक मतलब एक ऑफिस यहाँ होता है जिनीवा में, which represents the country into WTO. And WTO works by committees. WTO में बहुत सारी committees हैं, 20-25 शायद ज्यादा होंगी, उससे forums हैं जहाँ different officers cover those committees. So basically like India maintains a 9-officer committee. हमारे 9 officers हैं जिनीवा में. अभी currently 7 हैं यहाँ पे, but the capacity is 9. तो उसमें से एक फंक्शन होता है, मतलब जो गुड्स ट्रेड का फंक्शन होता है, कि इसको बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस. सो बेसिकली टॉपिक, सो एनी पॉलिसी और एनी लेट्स से, आई मीन जो भी 4 फंक्शन मैंने कहे WTO के, उससे रिलेटेड कुछ भी काम व्हिच कंसर्न्स गुड्स ट्रेड, बिकॉज जो ट्रेड है, इट कैन बी एग्रीकल्चर, इट कैन बी गुड्स और इट कैन बी सर्विसेज. एंड देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो WTO में IP जिसको बोलते हैं, तो that is also kind of managed through WTO. I mean the trade aspect of that. तो ये चारों एरिया में एक ऑफिसर या दो ऑफिसर्स, एक या 2 ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो आई एम इन्वॉल्व, आई रन दी गुड्स ट्रेड पार्ट व्हिच इज कॉल्ड द नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, रिपोर्टिंग इनटू द इंडियन एम्बेसडर टू द WTO. So there's a permanent, it's called, the post is called permanent representative or ambassador to the WTO. Every country has that post. So my boss is essentially a IAS officer who's 97 batch, Tamil Nadu, 99 batch actually. I keep forgetting between the year, but around that time. So like a absolutely brilliant person by the name of Rajendra Navneet, one of the finest officers in the country. He's the Indian ambassador to the WTO, and my boss. And I also look after the two other topics which are called environment and e-commerce, the digital trade. तो ये दोनों एरिया ऐसे हैं जिसमें काफी नए रूल मेकिंग हो रहे हैं या होंगे आगे जाके. तो बेसिकली जो मैं करूंगा उसका इम्पैक्ट अभी तो नहीं होगा, मतलब मेरे टेन्योर में तो नहीं होगा, बट मे बी 3-4 years डाउन द लाइन इन चीजों का इम्पैक्ट होगा. तो दोस टॉपिक्स आल्सो आई कवर. सो दैट इज अ समरी बेसिकली. आई मीन कमिटी मीटिंग्स होती हैं, वहां पे यदि कोई देश कुछ प्रॉब्लम रेस करता है इंडिया के अगेंस्ट, तो उस पर उसका जवाब देना, या फिर आपको कुछ इशू रेस करना है किसी और देश के अगेंस्ट, तो वो वहां पे रेस करना, या फिर बायलैटरल मीटिंग्स करके लोगों से कोऑर्डिनेट करना, उनको समझाना हमारे पोजीशंस. ये सब काम जो है ऑन अ डे टू डे बेसिस दिस गोज ऑन बेसिकली. सो हाउ वेल इज दिस प्रोसेस स्ट्रीमलाइन? मतलब आपको इंडिया से कोई इनपुट कितना जल्दी और कितना स्ट्रीमलाइन तरीके से मतलब आ जाता है वहां पे जिनीवा में? Very streamlined process, Ashutosh. See, the Department of Commerce, which is under the Ministry of Commerce and Industry. So Department of Commerce is like the focal department in India. We are all part, I mean, I am also part of the Ministry of Commerce only. So there is a whole, let's say, set of officers in Delhi, which is called the Trade Policy Division. So they look at various, I mean, WTO is not the only place of trade policy. There are like bilateral agreements. There is also regional discussions which happen. So the TPD division in Delhi looks after all the trade policy aspects, and of course also the WTO aspects. So I coordinate with the officers in Delhi. Okay. Typically they are the IAS officers or trade services or economic services. Different services they come from. Revenue sometimes, IRS officers. So yeah. So very well, I mean, there's a full kind of coordination between Geneva and Delhi, and only when Delhi endorses something, then only then you take a position. So recently India did a $400 billion export for the first time, I think, in our history. So उसमें WTO का कितना रोल था? I mean, I am a layman in all this, so my question may be not technically correct, but I just wanted to understand that how far was WTO involved in all this to help India? I mean, our mission at WTO, I mean, to help India in achieving its target of $400 billion export.
Sure. Let me give you some data on that and I'll come to the role. So, see, in 1948, when we joined GATT, India was still a very prominent trading country. We used to be a top 10 exporter of goods. So there, again, just to kind of revisit this point, exports are or traders of two types, goods and services. Yes. You can export and import both goods and services. Agriculture also kind of becomes goods only in the overall, let's say, calculation. So 1949 में India was a top 10 exporter in the world. उसके बाद से we stopped exporting. I mean, we stopped becoming an exporting country. 1957 तक we were top 20. उसके बाद हम top 20 से ही बाहर हो गए थे. फिर 2010 में we became top 20 again, and now we are around 12th. I think we will finish the last year on 12th. So trying to get into top 10 now. Last year meaning the last financial year, which is 21-22. We did 420 billion in goods and about 250 billion in services. Round off करके वो 669 आता है basically दोनों मिला के, तो 669 billion. So जो mission in Geneva is not directly involved in the export aspect of it. मतलब WTO is for a general policy part, right? तो जो issues, but हाँ, यदि कुछ issues आपके against raise होते हैं तो उसको defend करना, या आपको कुछ समस्या है किसी और देश के साथ तो उसको highlight करना WTO में, those functions are there. But the export promotion function basically is largely in Delhi. We do, I mean, of course, all officers here also do what you can do in a bilateral discussion, but most missions which are in Geneva do not have the mandate for actual trade deals. Their mandate is to monitor the trade architecture and the rules of WTO. The mandate is not to do actual deals. वो तो capitals के through ही होता है. So yeah, so you can keep giving inputs to Delhi or to your boss, but not like ऐसा नहीं कि मैं पर्सनली जाके एक ट्रेड डील नेगोशिएट करूंगा, वो एस्पेक्ट जिनीवा में नहीं है. सो अभी जैसे आप इंटरनेशनल फोरम पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो व्हाट इज योर फीलिंग हाउ इंडिया इज परसीव्ड इन इंटरनेशनल फोरम्स लाइक दीस? सो इट्स एक्चुअली अ ग्रेट क्वेश्चन आशुतोष. काफी लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं इस चीज को लेके. माय एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी वेरी पॉजिटिव. India is a very important voice in WTO. We have been involved through the years in several important discussions in WTO also. And of course, we are a large country. We are 5th largest economy in the world, 12th largest exporter this year. Hopefully, we will break into top 10 soon. So India has a very prominent voice. तो जब दूसरे देशों के लोग मिलते हैं जो मेरे काउंटरपार्ट्स होते हैं, तो उनको काफी क्यूरियोसिटी होती है अबाउट इंडिया कि भाई क्या चल रहा है इंडिया में, क्या पॉलिसीज हैं, आपका आउटलुक क्या है. ऑल्सो इट इज ऑलवेज गुड टू शोकेस देम इंडियाज अचीवमेंट्स. तो मैं काफी बात करता रहता हूँ इन लोगों से उस बारे में कि भाई सिंपल स्टफ लाइक थिंग्स व्हिच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन इंडिया, लाइक जैसे पेमेंट्स. आई मीन आई हैव डेमोंस्ट्रेटेड स्टफ लाइक यूपीआई एटसेट्रा टू पीपल. पीपल आर ज़ैप्ड. उनको लगता है ये सब मतलब स्विट्जरलैंड में यदि मुझे किसी को पैसे भेजने हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी वेंडर को, या कुछ बिल पे करना है, तो इसमें एक दिन लगता है. मैं आज जाके मैं उसको ऑर्डर क्रिएट करूंगा, वो कल जाके एग्जीक्यूट होगा. इफ आई हैव टू डू इट ऑन द सेम डे, आई हैव टू पे द बैंक अ फी टू काइंड ऑफ गेट दैट फैसिलिटी. तो ये सब चीजें मतलब जब मैं इंडिया से यहाँ पे आया तो मुझे ऐसा लगता था कि कहाँ आ गए ना, मतलब कुछ मतलब इसेंशियली इंडिया में तो मोबाइल फोन पर पूरी जिंदगी चल जाती है. तो दैट इज नॉट द केस इन स्विट्जरलैंड एटलीस्ट. तो काफी देशों के लोगों को काफी आश्चर्य होता है कि दिस इज लाइक अ वेरी, इंडिया में काफी नई चीजें हो रही हैं. इवन लाइक वैक्सीनेशन फॉर एग्जांपल, लाइक आई यूज्ड टू गिव पीपल दिस लाइव डेमो ऑफ कोविन कि भाई इतने हो गए हैं वैक्सीनेशन, आज के दिन हो गए हैं, ये एज ग्रुप है, ये वैक्सीन है. तो पीपल वर टोटली zapped with all of this, right? So I think in that sense the curiosity is also there, and there's a lot to talk also. मतलब both ways, people also want to know, and if you engage them in the right conversation, they also really take away the right messages कि अच्छा इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है नया. And I think it's a great great kind of meeting point to shape some of your worldview. जैसे अभी एनवायरनमेंट टॉपिक चल रहा है तो उस पर हम लोग काफी लोगों से बात करते रहते हैं कि कैसे, चूंकि इंडिया इज अगेन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एनवायरनमेंट. वी मेड अ कमिटमेंट फॉर नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070. इवन अदरवाइज काफी कुछ इनिशिएटिव्स इंडिया ने लिए हैं एनवायरनमेंट के ऊपर. तो वो बाकी लोगों को शोकेस करना, उनसे बातचीत, उनकी बातें समझना,
finding common grounds to discuss. तो ये सब चीजों में काफी इंटरेस्ट भी है और पीपल एक्सपेक्ट कि इंडिया विल लीड, विच इज अदर थिंग. मतलब यदि आप नहीं बोले किसी मीटिंग में या किसी कमेटी में तो लोग सडनली पीपल विल आस्क कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं. सो इट इज आल्सो एक्सपेक्टेड दैट इंडिया विल take a lead role in some of the conversations, in shaping the conversations, and also in basically protecting not just our own interests but the interests of the developing world in general. Because obviously, I mean, China is still classified as a developing country, but of course they are very big overall size mein. So we are like the largest developing country in that sense outside of China. So there's a lot of expectation that we contribute constructively not just to our interests but to the global interests when it comes to talking to the developed countries. Right. Yeah, you said about UPI. I still feel UPI still remains an under celebrated achievement. मतलब UPI इतना massive चीज है, but in India I think we fail to realize कि कितना बड़ा है UPI and कितना technologically advanced payment systems हम use करते हैं. True. ये तो जैसे WTO is involved largely in policy formulations and policy decisions. So how difficult is this entire landscape of policy formulation, especially in a country like India? See, two things. One is that जो trade policy है, let me talk about that and I'll come to the Indian government aspect of it. So the trade policy in general is a very different type of rule compared to other governmental organizations. जो चीज यूएन में होती है या वर्ल्ड बैंक या IMF में होती है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता है. इन्हें बेसिकली फॉर एग्जांपल यदि आप देयर आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस इन यूएन जहां लीगली बाइंडिंग एस्पेक्ट इज देयर कि भाई आपने कुछ कमिट किया है तो वो it is binding on you legally. Most of the organizations run on consultative processes. They are not run by necessarily by legal obligations. WTO actually has got a legal obligation. So जो trade policy है, so जो 94 में जो agreement हुआ and it got effect, came into effect in 95, तो वो that agreement is very critical because वो legally binding agreement on all the members. So basically whatever you signed up for in that time, तो you have to abide by it at all points of time. तो trade में ये कैसा होता है कि agreements होना मतलब WTO still works on different aspects of various agreements, I mean different parts of the global trade. But किसी भी चीज पे agreement बनना इस ढंग से कि आज यदि मैंने कुछ साइन किया तो वो अगले 20, 50, 100 साल तक भी चलता रहेगा, तो that is of course a difficult question for any country. Whatever you are committing to, you are committing with, जैसे इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी, कि कोई भी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट थिंक ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेटली. आपकी जो समझ है या आपकी जो सोच है उसके हिसाब से आप आगे मतलब फ्यूचर यू कैन सी, यू कैन एनविसाज, बट इट कुड बी अ फ्यू इयर्स, 5 साल 10 साल. लेकिन यहाँ के जो अग्रीमेंट्स हैं दीज आर लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स, तो हेंस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर अग्रीइंग टू. इसलिए ट्रेड अग्रीमेंट्स टेक टाइम टू साइन अप. ऐसा नहीं है कि मतलब मल्टीलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स, बायलैटरल इज डिफरेंट. यदि आप if India and UK are doing a deal or India or any two countries are doing a deal, that is okay because you know कि भाई आप इस देश को क्या एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से क्या इंपोर्ट होता है, तो ये जानकारी आपके पास पहले से होती है. एंड यू हैव अ जनरल सेंस कि भाई इस देश के साथ आपके टाई-अप कैसा रहेगा, इकोनॉमिक टाई-अप कैसा रहेगा, कैसे इवॉल्व होगा. तो यू कैन टेक मच मोर लेट्स से इन्फॉर्म्ड डिसीजन, मच मोर नैरो डिसीजन. WTO is a global forum, so whatever you commit applies to all trading partners. I mean, essentially all members of WTO. उसको बोलते हैं MFN, most favored nation. So basically you accord a MFN status to all other trading partners. So that is something which makes this job difficult, क्योंकि आप इतने आसानी से नहीं commit कर सकते हैं किसी भी चीज को लेके, because this will be held. I mean, you will be responsible to implement it forever in perpetuity. Correct. So, but on the so when the governments also make policies, the second part of your question. So in general, see, government policies are also like being made in a way that they will apply for a long time. You cannot undo government policies very quickly. Right? जैसे बजट भी जब पेश होता है तो you will see कि भाई बजट में कुछ प्रोविजंस आते हैं, उसका थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करते हैं कि भाई ये प्रोविजन आपने अनाउंस किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, फिर इंडस्ट्री को कुछ फीडबैक आया या कुछ और आपको फीडबैक मिला, तो यू विल बेसिकली फाइन ट्यून इट
बट एक आध 2 महीने का ही वो एक विंडो होता है, उसके बाद यू इम्प्लीमेंट what you said in the budget, right? So government policy is like that. You cannot necessarily do a lot of things very quickly because you have to think in terms of the future impact. तो काफी सारे लोग जो मतलब मैं भी वही करता था बाहर से, जब आप देखते हैं people like us who work in the corporate sector, तो see corporates are much more agile in the sense because आपका downside is also limited. आपने कुछ decision लिया, वो गलत हो गया, you can undo it, you can do something else, right? आपने कुछ contract sign किया, वो नहीं चला, you can say कि भाई मैं ये contract resign कर रहा हूँ, या basically you will come out of it or renegotiate all of that, right? तो government policy cannot be made like that. आपने एक बार rule बनाया तो rule बना, मतलब you know it is, once it is in the gazette it is there. तो काफी सोच समझ के करना पड़ता है. The speed seems slow because there's a genuine reason for it. ऐसा नहीं कि people want to slow down things. It is slow because of the way the amount of thinking which needs to be done basically in the process. Yes. So yeah, that's true. मतलब हम पूरा, कई बार हमको पूरा पर्सपेक्टिव नहीं रहता है before we make such comments कि गवर्नमेंट में सब स्लो होता है and all this. Yeah, I agree. So एक मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि for a country like India, why trade is important? मतलब I mean, what I want to actually ask is कि हमारे यहाँ अभी भी ट्रेडिंग शुड बी डन बाय द MSMEs मेनली. अगर हमको एक अच्छा बड़ा ट्रेडिंग नेशन बनना है, then our MSMEs should start exporting more. That's what I feel, rather than the big multinationals that are anyway doing it. So Right. how to make trade lucrative for them? That is one thing that I want to understand. So this is a great question, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे भी काफी सारे लोग जो हैं कॉल पे या जो सुन रहे हैं उनकी खुद की कंपनीज वगैरह होंगी. Yeah. Trade is a very important part of a country's economy. Generally जो हम बोलते हैं GDP, तो trade is one of the 4 parts of GDP, other being government expenditure, private expenditure, I mean business expenditure, private consumption, and then basically the net of exports minus imports. अब इंडिया में कैसा है कि imports तो more or less fixed होते हैं. I mean you have to import almost all of your crude oil requirement, क्योंकि इंडिया doesn't produce crude. जैसे जो हमने बोला कि भाई 420 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, तो एक्चुअली 611 बिलियन का इंपोर्ट भी हुआ. उसमें से 190 बिलियन वाज ओनली क्रूड. Almost approaching 30% of the number was just crude. So then there's of course gold. इंडिया में गोल्ड कंजम्पशन काफी होता है, तो वो भी इंपोर्ट होता है. Some of it is re-exported in the form of gems and jewelry, but काफी सारे लोग पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी गोल्ड इंपोर्ट होता है. So तो बेसिकली जो कि आपके इंपोर्ट्स फिक्स्ड हैं, नॉट वी डोंट मेक एवरीथिंग. तो एक्सपोर्ट्स इज अ वे टू नॉट जस्ट मैक्सिमाइज countries, I mean narrow the gap between, you know, it's what is called trade deficits, not exports minus import. So not just narrow the trade deficit, but also create earning potential for smaller companies. जो बड़े देश होते हैं, उसमें जो उनके जो एक्सपोर्टर्स, they are generally not necessarily very large firms are exporting all the time. उन काफी सारे you know छोटे मोटे एक्सपोर्टर्स भी होते हैं. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. जैसे इंडिया में अभी काफी सिटीज में you will see these you know there are these vendors जो आपको प्रॉमिस करते हैं कि जर्मन किचन लगाएंगे आपके घर में, राइट? काफी शहरों में you will see this. तो वो what is essentially that, उन्होंने जर्मनी की कोई MSME होगी, उन्होंने इंडिया में आके they had this vision कि भाई इंडिया में you can find people who can take pictures, who can do engineering drawing, who can model a house, right? Who can, I mean पिक्चर लेके आप उसमें देख सकते हो कि भाई कहाँ पे क्या फिट होगा, right? ये वो इंडिया आए, उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी इसके बारे में कि भाई कैसे आपको ड्राइंग बनानी है, कैसे आपको फोटो खींचना है. यदि मेरा किचन है 10x8 का, तो उसमें कहाँ में आपको किस तरह की फोटो की जरूरत पड़ेगी, राइट? ये ट्रेनिंग उन्होंने इंडियंस को दी. अब आप जो इस शॉप पे जाते हैं तो वो क्या होता है, you see the model, right? There's a model kitchen. आप मॉडल देखेंगे, मॉडल किचन देखेंगे, you will, and some demo pieces are there. Yeah. Then the person will come to your house, he will do all the measurement, ये वो पूरा फोटो खींच के ड्राइंग बना के वो भेज देगा जर्मनी. फिर 4 महीने बाद आपका किचन मिल जाएगा, इंक्लूडिंग अप्लायंसेस वगैरह. तो ये क्या है? This is a classic example of export. So first of all, they are exporting not just the kitchen to you, which is essentially coming from Germany,
they're also exporting the service to you, which is essentially to say that, क्योंकि I'm sure that they charge their vendors for the service also, कि भाई आपको सिखा रहे हैं हम, या आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, या just for the fact कि आपकी ड्राइंग के ऊपर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो they will also charge these people, which is essentially again an export of services. We pay them, so essentially we are importing the service. तो इस तरह का जो विजन काफी सारे देशों में बहुत सालों से रहा है. आज दुनिया में से 3 देश हैं जिनका एक्सपोर्ट एंड गुड्स प्लस सर्विसेज मिला के $1 ट्रिलियन के ऊपर होता है, $1 ट्रिलियन के ऊपर. यूएस, चाइना एंड जर्मनी. जापान इज क्लोज टू 900 बिलियन, और फिर कोरिया वगैरह हैं, कोरिया, हांगकांग, नेदरलैंड्स, यूके. ये सारे देशों में कल्चर रहा है कि आप अपने मार्केट पे ही फोकस नहीं करते हैं. यू ट्राई टू सी कि मैं इस सॉल्यूशन को कहाँ लेके जा सकता हूँ, कहाँ और लेके जा सकता हूँ. एंड दे हैव इन्वेस्टेड इन दिस प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस. अब जैसे आपको ब्राजील एक्सपोर्ट करना है, या आपको अफ्रीका में किसी देश में एक्सपोर्ट करना है जहां लैंग्वेज के इश्यूज हैं, आपके कोई पर्सनल कनेक्शंस नहीं है. मार्केट कैन बी बिग, लेट्स से नाइजीरिया और ब्राजील और अर्जेंटीना, these could be big markets, but you may not understand the language, the culture, the ways of doing business. तो उसके अपने तरीके होते हैं in terms of how to get the financial guarantee and advance payments, वो सब. लेकिन मुझे एक सोच होती है कि भाई मैं पता, आज सपोज आप कोई कंपनी चला रहे हैं इंदौर में बैठ के, तो योर फर्स्ट थॉट विल नेवर बी कि मैं ये बना के ना ब्राजील बेचता हूँ. यू विल स्टार्ट, द टिपिकल स्टाइल ऑफ थिंकिंग इज कि पहले मैं इंदौर में करूंगा, फिर मैं इसको मुंबई लेके जाऊंगा, फिर दिल्ली लेके जाऊंगा, फिर बैंगलोर लेके जाऊंगा. But you don't think of an export option as a logical first option. This is a big cultural difference in other countries. It will probably change in India also. One good thing is the reason government talks a lot about exports, and you will see a lot of ministers. I mean, minister keeps talking. Honorable Minister Mr. Piyush Goyal, he talks a lot about exports. उसका reason ये भी है कि the whole gain in exports needs to motivate more people to think about it. हमारे बनता तो बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि इंडिया इज नॉट डेफिशिएंट इन एनी वे इन टर्म्स ऑफ स्किल्स. लेकिन वो जो विजन है कि भाई आप इंडिया के मार्केट के बाहर भी कुछ बेच सकते हैं, दैट एसेंशियली टेक्स अ बिट ऑफ अ टाइम टू काइंड ऑफ फिक्स अप और काइंड ऑफ चेंज. तो वो एक मेंटल चेंज है बेसिकली. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जो भी बड़ी इकोनॉमीज देखेंगे, इटली, जर्मनी, जापान, कोरिया, उनके एमएसएमईज ने बहुत पैसे कमाए हैं थ्रू एक्सपोर्ट्स. हर कंट्री का अपना एक मॉडल होता है. जैसे जर्मनी में है, कोरिया में भी ऐसे बड़े जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, दे ऑलवेज हैंड होल्ड स्मॉलर एमएसएमईज, और जो बड़ी कंपनीज जब बाहर जाती हैं तो उनके साथ छोटी कंपनीज भी चली जाती हैं कि भाई कोई बड़ी ऑटो, हुंडई ऑटो कंपनी है, तो दे विल आल्सो गेट द सप्लायर समटाइम्स टू सेट अप इन अ न्यू कंट्री, राइट. तो कंपनीज आल्सो कोलैबोरेट. तो ये जो कोलैबोरेशन है बिटवीन बिग एंड स्मॉल कंपनीज, बिटवीन government and companies, between your partners in other geographies, this needs to be boosted and this needs to be improved. And ये जो आप बार-बार सुनते हैं मीडिया में, जो इतना फोकस आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है because the government wants people to be aware कि भाई ये भी एक ऑप्शन है आपके पास. In fact, I'll give you an example. Indore SEZ did exports of 1800 crores on services this year in the. So you may not think, I mean, जब एटलीस्ट मैं पढ़ता था जीएसआईटी में, तो कैसा कोई इंदौर में तो कोई ऑप्शन था ही नहीं. 1-2-3 कंपनी थी नाम की, इम्पेटस थी, अगेन माय सीनियर सिद्धार्थ यूज्ड टू रन दैट, बट मतलब 2-3 कंपनीज ही हुआ करती थी इंदौर में उस टाइम पे. तो पर आज इंदौर से 1800 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है सर्विसेज के ऊपर. एंड इंदौर इज नॉट इवन अ, लेट्स से, इट्स नॉट अ लॉजिकल सिटी दैट यू विल थिंक ऑफ कि यहाँ से सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही होंगी. Indore is always known as a trading place, not so much a production place. Right. So ऐसा तो things are changing. I think everyone on the call, it's something to think about कि भाई कैसे यदि आप लोग involved हैं अपने businesses में, तो कैसे ये option explore किया जाए. जैसे आपने बोला, बहुत सारे हमारे जो alumni fellow successorians है, काफी सारे MSME units है उनके, काफी सारे लोग have their manufacturing setups. So how should they proceed? मतलब अगर किसी को, what are the, how to explore more about this? So I think there are a lot of organizations in Delhi which help. So there's something called the Federation of Indian Exports Organization, FIEO. I think chat पे भी 1-2 questions हैं इसके बारे में. FIEO actually has an Indore office. अच्छा. Because Indore is a commercial city, तो FIEO का एक branch office इंदौर में भी है.
तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मुझे चैट पे पूछा था कि वो कैसे इसको ग्लोबलाइज कर सकते हैं, माय सजेशन इज कि प्लीज FIO की वेबसाइट पर नंबर भी लिस्टेड है, बिकॉज इनफैक्ट आई हैड कॉल्ड दिस पर्सन माई सेल्फ, बट मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था उस टाइम पे, बट उनका ईमेल एड्रेस और फोन नंबर दिया हुआ है FIO की वेबसाइट के ऊपर, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसमें यू कैन कॉन्टैक्ट इन इंदौर। यदि आपको जवाब नहीं मिलता, यू कैन ड्रॉप अ मेल टू दिल्ली और एनी अदर लोकेशन वेरेवर यू आर बेस्ड। तो डेफिनेटली यू विल गेट सम गाइडेंस ऑन देम ऑन हाउ टू गो अबाउट इट, दैट इज वन थिंग। दूसरा, बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं इंडिया में। तो इफ यू आर इन अ वेरी स्पेसिफिक सेक्टर, कि भाई आपको जैसे टेक्सटाइल्स पे कुछ कर रहे हैं, तो उसका उस सेक्टर का एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल डेफिनेटली होगा। सारे ही जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, टॉप 15-20 सेक्टर्स इंडिया में जो बड़े होते हैं, जहां जो बड़े एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं, सब में सबके काउंसिल्स हैं। तो प्लीज सर्च फॉर दोस काउंसिल्स ऑन द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। उसमें यू कैन गेट द कनेक्ट लोकल कॉन्टैक्ट्स। मोस्ट ऑफ देम हैव आल्सो गॉट ब्रांच ऑफिसेस। तो जैसे उनके इंदौर में नहीं तो भोपाल में होगा डेफिनेटली काफी लोगों का ब्रांच ऑफिस। एंड ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो द, if you want to talk to the government directly, there's also DGFT, Director General of Foreign Trade. Again, they have an office in Bhopal. So you can approach them to understand how to maximize exporting opportunities. तो ये सब I think थोड़ा इसमें थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एंड once people understand कि भाई कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी और कहाँ पे सही जवाब मिलेंगे, उसके बाद the ecosystem is pretty big. I mean, so many people export, so ऐसा नहीं, मार्केट की कमी नहीं है, पर उसको सिर्फ क्रैक करना है कि कैसे वो कॉन्वर्सेशन यू कैन स्टार्ट। So what do you think are the current roadblocks or challenges that MSMEs are still facing in exports in spite of all these organizations in place? So basically आशुतोष, the problem is कि हमारे वहाँ अवेयरनेस नहीं है। कई बार क्या होता है कि सरकार भी पॉलिसी बनाती है, लेकिन वो पॉलिसी आप तक कैसे पहुंचेगी? सपोज मैं आपको बोलूं कि भाई इंडिया में कोई पॉलिसी है, स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी है। नाउ इवन इफ यू आर डूइंग अ स्टार्टअप, हाउ डू यू नो कि वो पॉलिसी आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है? करेक्ट। एप्लीकेबल है तो कैसे आपको उसका यूज करना है, हु इज द नोडल एजेंसी, हु टू अप्रोच, राइट? तो आई थिंक ये ऑफ कोर्स इंडिया इज आल्सो वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री, दैट्स द अदर थिंग। क्योंकि काफी बार छोटे बिजनेसेस जो होते हैं वो अपने डे टू डे उनका इतना challenges होते हैं कि they are unable to kind of focus on some of these things. तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे बदलेगा once people understand कि भाई there is a government help available in some area या फिर guidance available. तो I think it's a slow process. I think the major handicap, मतलब of course every business has a challenge. I'm not realizing the actual challenge of let's say capital, land, electricity. वो तो होता ही है किसी भी business में जो होगा, वो तो definitely those challenges will stay. लेकिन धीरे धीरे things are improving on those counts also. Some states are doing more than others. So you will see that some states are attracting more investments or more capital. तो वो but I think एक ये जो mindset है कि भाई हम सिर्फ इंडिया में ही काम करेंगे या बाहर हम कुछ भेज नहीं सकते, या हमारे पास ऐसा कुछ ऑफरिंग नहीं है जो बाहर बिकेगा, ऐसा एक्चुअली ऐसा नहीं है। Once you start exploring, you will realize कि बहुत सारी चीजें मतलब हो सकती हैं एक्सपोर्ट which you may not have thought about. करेक्ट, ट्रू। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि GSITS में भी वी हैव अ सेंटर फॉर इंक्यूबेशन, इनोवेशन एंड डिजाइन, जहाँ पे कि स्टार्टअप्स आर बीइंग इंक्यूबेटेड एंड विच इज द ड्रीम ऑफ आवर डायरेक्टर प्रोफेसर RK सक्सेना सर, and that is currently being led by Professor Apurva Gaiwag sir. So these two faculty members are doing great work at CIDI right now. So I just wanted to understand कि जैसे ये हमारा सेंटर है GSITS में, वो और कैसे इन्वॉल्व हो सकता है टू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स इन अ बेटर वे टुवर्ड्स these things. So I have two suggestions. One is of course कि industry tie-ups are very important. Incubation centers generally work better if they are working on practical problems. तो यदि इंडस्ट्री टाइप्स, इनफैक्ट हमारी alumni जो हैं उन्हीं की कंपनी से टाइप हो सके, या फिर if they are working in large companies so they can help. I think in general I would say that हमारा alumni network has been fairly weak, मतलब relative bigger institutes, right? तो शायद अभी आप लोगों ने काम किया है तो maybe things are changing in the last few years, but generally speaking it's a weak setup.
जितनी हमारी पुरानी हिस्ट्री रही है कई सालों की, कई डेकेड्स की एक्चुअली, तो उसके relative to that the marketing side of it is not that strong. तो आई थिंक ये कनेक्ट बनाना जरूरी है इंडस्ट्री के साथ. एक तो ये है कि भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे काम किया जाए. दूसरा, अच्छा, यदि इंडस्ट्रीज कैन गिव देम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स वगैरह तो दैट इवन बेटर, कि इफ दे हैव एक्चुअली गॉट अ रियल प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड इफ दैट कैन बी सॉल्व्ड इन द इंक्यूबेशन सेंटर, तो दैट स्ट्रेट अवे हेल्प्स. दूसरा आई वुड से कि टाइंग अप विद बिगर इंक्यूबेशन सेंटर्स. सो फॉर एग्जांपल, जैसे Hyderabad में, Telangana में, there's this IP hub which has been created. Pune में there's a big center which is run by it's NCL करके, there's an organization which runs a big incubation center in Pune. और भी हैं, बहुत सारी bodies हैं actually. There are larger institutes, जैसे IIM Ahmedabad का एक center है, IIM Calcutta का एक center है. A lot of IITs have their own incubation centers. In fact, IIT Kanpur के जो director हैं, Professor Abhay Karandikar, he's from Gwalior. I mean, he's not Saxerian, but he's from the Madhav Institute. तो उन्होंने वहां से बीटेक किया है, बाद में फिर उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एमटेक किया, अभी वो आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर हैं. तो he has got a wonderful incubation center. I mean, in fact, IIT Kanpur does a lot of work on some of this digital Bharat things and using blockchain and governance and things like that. तो पूरा कोविड वाला मॉडलिंग भी आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, प्रोफेसर मनीन्द्र अग्रवाल, तो वो भी आईआईटी कानपुर के हैं. तो उन्होंने he had done all the COVID modeling, etc. So, तो ऐसे institutions के साथ आप संपर्क करें, उनसे टच में रहें कि भाई can they, I mean, incubate the incubator, right? Basically, कि hand holding किया जा सके. I think these could be more practical ways to engage and kind of bring more excitement into Indore. Correct. So as you said, we are working quite hard on preparing the sort of updating the entire database of our alumni. We are almost close to 15 to 18,000 alumni till now. So we are working quite hard to make a complete database of them. Maybe in the next 1 or 2 years, you will see changes. Yeah. So जब आपका ये appointment हुआ था as a counselor, I saw some of your Twitter feed where you had posted pictures of you with the Honorable Prime Minister. So how was the experience of meeting Modi ji at Delhi? What was his? It was a surreal experience. In fact, वो भी बड़ा coincidence ऐसा था कि मतलब मैंने generally उनके ऑफिस को मेल लिखा कि भाई I have been appointed in this lateral role. Government is trying to get more lateral people to into the system for, I mean, जैसे मेरा रोल 3 साल का है, मेरा it's a fixed term role. So all the lateral appointments are like that. It's a 3-year, 5-year type appointment जो होता है. मैंने उनको मेल लिखा कि भाई I would like to take your guidance and interact. तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई जवाब नहीं आएगा, it was of course not expected. पर मुझे अगले ही वीक the office called up. Actually same week, मैंने मंडे को मेल लिखी थी और फ्राइडे को they called, वेडनेसडे को they called me. क्योंकि फ्राइडे को कंफर्म करेंगे टाइम. तो मैं तो मतलब एकदम सुपर फास्ट स्पीड से वो हुआ. And then basically I got the appointment for next Friday. So मतलब मेरे मेल लिखने से less than 2 weeks I actually met the PM. So it was a very surreal type meeting. I mean, again, meeting a head of a country is a very different experience. Yeah. मैं काफी सोच के गया था कि मैं क्या बोलूंगा, मतलब मैंने आधे घंटे का प्रिपेयर किया था कि भाई फिलहाल 5-7 मिनट का मुलाकात मौका मिलेगा. करीब 20 मिनट we were there. I mean, I was there with him in the room. वो जो काफी जो फोटोज आते हैं, एक बड़ा सा टेबल होता है, उसके पीछे PM in that room. तो कोई था नहीं, मतलब it was just the PM and me. It was a little bit, let's say, difficult क्योंकि जितना ही प्रिपेयर करके जाओ, I mean, of course, to talk to the PM was a different experience, but he gave me a lot of guidance. पहले तो उन्होंने पूछा कि इंदौर से निकल के ये सब में कहाँ आ गए, मतलब so which also shows that he had done a lot of research in the sense that he must have had a file on me कि भाई correct ये कौन है, क्या background पूरा. So he had everything. I mean, he knew everything पूरा the background वगैरह, and he gave me some ideas कि क्या करना चाहिए and how to showcase India in a better light on a global forum. So I think that was a great let's say discussion. और बाकी फिर मेरे कुछ आइडियाज थे ऑन एक्सपोर्ट्स, तो वो मैंने उनको दिए कि किस तरह से एक्सपोर्ट्स को हम बूस्ट कर सकते हैं इन सम एरियाज.
प्लस जो डिपेंडेंसीज हैं कुछ हमारी, व्हाट कैन import dependencies जो हैं उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो कुछ some ideas I had, तो I gave it to him. But he was very supportive. I mean, he gave me, I mean, told me कि भाई anyway, like जैसे suppose किसी नए कंपनी में भी आप जाओगे at a senior role, तो it's not easy to fit in, right? हर कंपनी का कल्चर अलग होता है. Correct. जो ऑलरेडी लोग वहां पर हैं उनको लगेगा they may feel कि ये बाहर से कोई क्यों आया, why did I not get promoted. ये तो normal corporate setup में भी होता है. हाँ, correct. Those difficulties of course were expected in the government also कि भाई बाहर से कोई आ रहा है तो वो will the person fit in, Right. इसको क्यों हायर किया, you know, those things are always there. So I think he explained to me कि भाई मतलब you should focus on work and not worry too much about some of these things. तो अच्छा guidance मिला और मतलब it was a great experience. So what after this means? I mean, you said it is a 3-year role that you have right now. So it's too premature to ask you this, but what are your future plans once this role gets over? Actually, I don't know, आशुतोष. मतलब देखो कैसा हुआ कि जब मैंने ज्वाइन किया सरकारी रोल, तो as per the process जो मेरी 3 कंपनीज थी, तो मैंने हेलो राकेश सर. Yes, we can see director sir has also joined. Good to see you, sir. We will invite him to speak once our discussion gets over. So I mentioned him that आप याद कर रहे थे सर को. I told him कि आप you had fond memories of sir when you were in the college. So fond sir, difficult memories of your subject, sir. बड़े मुश्किल से पास हुआ था मैं. But going back to the plans, Ashutosh, so मतलब I resigned from the 3 companies as a director क्योंकि obviously when I'm in the government I cannot do anything outside. So actually I don't have a good answer because I don't have a job, I don't have the companies. I mean I'm out of the companies. and this is a 3-year old. तो जब मैं वापस जाऊंगा पुणे, someone in the chat asked कि मैं कहाँ पर हूँ. मैं जिनीवा में हूँ उस समय. I think Umesh had asked the question. तो उमेश जी मैं जिनीवा में हूँ. I'm not in Pune. I'm based in Pune, but आऊंगा, जब आऊंगा पुणे तो I'll get in touch. तो but हाँ, I actually don't know. September 2024 तक है ये रोल, 2 सितंबर तक. तो अगस्त कह सकते हैं. उसके बाद फिर देखेंगे. मैं एक आपसे पूछना चाह रहा था because you are already involved in parallel non-governmental organizations and I would say parallel media. मतलब आप भारत वार्ता में it's your channel. आप स्माही फाउंडेशन को लीड कर रहे हो. तो how important in today's day and age this parallel media and parallel voice has become? So anyway, I'm not involved now. I was involved. But, I mean, I kind of left all of this before I joined. Yeah. But I think in general, I think it's very important to have. I think social media in general has benefited all of us. थोड़ा cynicism होता है कि भाई WhatsApp पे 50 forward आ रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है. It's a part of the problem. It's a information. वो signal to noise ratio वाली बात है, right? So I mean, how do you basically find the signal from all the content? तो थोड़ा ओवरलोड तो है, लेकिन जो पर्सपेक्टिव्स नए मिलते हैं, प्लस लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है. वन थिंग, जैसे ट्विटर का मुझे फायदा मुझे ये हुआ कि मैं बहुत सारे लोगों से पहचान हुई वर्चुअली, जो बाद में अच्छी दोस्ती में बदल गई, या आई हैव वर्कड विद पीपल. जैसे इनफैक्ट जो कंपनीज मैंने 3 कंपनीज जो मैंने चालू की थी, तीनों के फाउंडर्स जो थे वो मैं आई डिडंट नो देम, आई मेट देम ऑन ट्विटर ओनली. अच्छा. तो सबसे दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी बाद में कि भाई बात करते करते, और तो that you started working together in the same, I mean you co-founded a company, right? Yeah. तो ये I think this is a very unique advantage of social media कि भाई you are able to connect with people who you will not otherwise come to know, right? Correct. कि भाई जैसे आप हर्षा भोगले को आप कुछ लिख रहे हैं और वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, अब you grew up listening to हर्षा भोगले's comment, but you never thought कि आप उनसे मिलोगे, उनसे बात करोगे, right? या आप किसी सेलिब्रिटी का एक अलग क्रेज होता है, but in general more knowledgeable people also. जैसे I think, I mean Professor Karandikar is a good example. I mean of course I didn't know Professor Karandikar, but because भारत वार्ता एक मैंने चालू किया था, तो मैंने उनको ऐसी मेल लिखा इनवाइट करने के लिए, तो बाद में पता पड़ा कि वो ग्वालियर से हैं, तो फिर वो और भी पहचान निकल आई, मतलब उस तरह का. तो मतलब I would have never met him in my life if social media did not exist, right? तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं कि भाई आप काफी लोगों से कनेक्ट टच में आते हैं, काफी नई चीजें सीखने को मिलती हैं. तो I think that it's got a lot of positive aspect, and plus basically
in a corporate setup, you don't know किसका क्या interest है. कोई भी media organization होगा, they will have some corporate interests. Correct. तो उनका क्या personal interest है, उनके क्या connections हैं, so that you don't know on how things are running, right? So social media just gives you the chance. Of course, the downside is कि अब चूंकि सबके पास कैमरा है और WhatsApp है, तो basically now what is true and what is false, that becomes a bit of a difficult task to figure out कि भाई आपको खुद को जाके समझना पड़ेगा कि क्या सही हो सकता है, झूठ हो सकता है. Yeah, true. Ashish ji, we have some audience questions also which they have asked. So if I'll just take few of them. So Niklang ji is asking about a current burning issue that is in the media right now about the food trade. So I'll just read it out. As India is now a food surplus country, still we are having challenges in trading with other countries for agri products due to restrictions by WTO. What steps government is taking to remove these restrictions? Yeah, I cannot comment on this topic because you are into non-agricultural. This is my area of work and this is a policy topic under discussion right now. Yeah, I can tell you why the restrictions exist because this is just history and everyone can know about this. तो जब agreement on agriculture sign हुआ था, मतलब agreement on agriculture is one of the many parts of WTO agreement. तो जो WTO का जो 94-95 वाला agreement है, उसमें one of them was on agriculture. तो उसमें एक provision ये था कि हर country कितना सब्सिडी दे सकती है अपने देश में on agriculture. तो वो every country had some commitments to follow. And if you exceed that subsidy, you have to notify in WTO कि हमने क्यों subsidy extra दी, etc. चूंकि now तो उसमें चूंकि India has got a public stock holding, which is essentially the FCI and I mean states also buy in India. तो वो जो प्रोड्यूस आपके पास होती है FCI गोडाउन्स में, उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते because it will be considered subsidized export. Why? Because we are buying those on MSP, on a minimum support price. तो सपोज मार्केट में प्राइस 20 रुपए थी, आपने 22 रुपए में गेहूं खरीदा, फिर यदि आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं एट अ हायर प्राइस, तो वो इट विल बी कंसिडर्ड अ सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हिच इज नॉट अलाउड एज पर द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो दैट इज द मुद्दा, दैट इज द इशू. राइट नाउ ऑफ कोर्स दिस ईयर इंडिया हैज फूड सरप्लस. वी आल्सो फेड 800 million people. I mean 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया गया फॉर अबाउट 8-9 months, almost 18 months के विंडो में 3-4 वो चल, अभी भी चल रहा है एक्चुअली, अभी चल रहा है, जून तक आई थिंक इट्स एक्सटेंडेड. तो ऑफ कोर्स गुड, दैट्स अ गुड थिंग. फ्रॉम 1960s जब इंडिया वाज अ नेट फूड इंपोर्टर, नाउ वी आर नॉट जस्ट एबल, आई मीन वी आर नॉट जस्ट एक्सपोर्टिंग, इनफैक्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स वर 50 billion in the 420 में से 50 billion was agriculture exports in 2021-22. So we have come a long way. When you say agriculture, it also means horticulture, aquaculture, meat exports. So everything included is about 50 billion. But it's of course a huge number. So I think it's a great sign that we have become food surplus, etc. But what we can do, I think I will not be able to comment because it's a आप देखेंगे what we can do. You will come to me, let's say a few weeks. We will get to read it in few days. Niklang ji is asking, there are many opportunities and internship programs that government departments generally have. So how can our college students from GSITS get some benefit out of these internship programs, और क्या-क्या government side से कुछ initiatives के बारे में अगर आप बता पाए? Sure. See, one thing is that the government also hires a lot of interns, consultants in Delhi mostly, because central government is Delhi based, right? Yeah. I think हमारे यहाँ शायद काफी लोगों को वो interest नहीं होता है, but all these are posted on the government website. So if you have a specific interest in some department, say Ministry of Power or Ministry of Road Transport and Highways, so you should keep checking their websites कि भाई इनका क्या roles हैं. Government recruitment is a very well defined process. उसमें ऐसा नहीं कि आप जो प्रोसेस होती है वही फॉलो होगी. तो एड निकलेगी, आपको उसमें रिस्पॉन्ड करना होगा, सब कुछ फिक्स होता है, मनी, पर्क्स, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, टेन्योर ऑफ द रोल, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो दिस इज वन वे यू शुड कीप ट्रैक ऑफ द व्हाट्स हैपनिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. दूसरा, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर मिनिस्ट्री के अपने अपने, लेट्स से जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री में जैसे ट्रेड से रिलेटेड समथिंग कॉल्ड सेंटर ऑफ WTO स्टडीज इन दिल्ली.
It's linked to IIFT, the International Institute of Foreign Trade. तो उसमें internships होती हैं. There's something called Center for Regional Trade, Center for Trade and Investment Law, CTIL. So all these bodies keep, I mean, this is just, I'm talking about the trade part. Every ministry will have such institutions basically. Yeah. तो आपका जहाँ पे interest है, you should keep watching it out for and coach people to check for those options. Right. उसमें apply करते रहिए, कर सकते हैं basically. But there's a great point which was on the chat कि actually international organizations में भी internships होती हैं. If you see, जैसे UN has got a program called Young Professionals Program. UN का ये हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है. एक्चुअली WTO में भी एक है कॉल्ड YP, यंग प्रोफेशनल्स. See, this is, I think Indians don't tap into it as much as they should. काफी बार ये अनपेड इंटर्नशिप भी होती है, तो you have to also, I mean, if you really can, you know, like afford living in Geneva for 6 months or New York for 6 months without getting any money, I mean, that becomes a challenge, of course. बट एनीवे ये ऑप्शंस हैं अवेलेबल. इस तरह के ऑप्शंस भी होते हैं. इनकी वेबसाइट्स पे वो एड्स आती रहती हैं यंग प्रोफेशनल्स वाली या इंटर्नशिप्स वाली. तो मोस्ट ऑफ इट इज अगेन जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ विजिबिलिटी. इसमें ऐसा कोई प्रोसेस वाला इशू नहीं है. जो अप्लाई करेगा उसका इवैल्यूएशन होगा इन द स्टैंडर्ड वे, एंड दैट विल बी काइंड ऑफ, यू नो, पीपल कैन बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन दैट. बट आई थिंक वो पता होना कि कहाँ what these opportunities are. I think that is the first step, कि कहाँ पे जाके ढूंढना, किन वेबसाइट्स पे ढूंढना. Yeah. Good. So I think we यही questions थे. I think एक question और था कि is Nasdaq and S&P listed in WTO? Nikhil, see, when I say trading, this is not financial trading. This is trading of goods and services. So this is not WTO is not a marketplace. This is essentially you can call it like the strategy making body of global trade, basically, rule making body. So this is not a trade in the sense of financial instrument, trade in financial instruments. Apur Gaiwat sir, he had written a comment that it is wonderful to see your career progression, that is your career progression, and reconnect with you after 1998. Yeah, absolutely, sir. I think it's a pleasure and a privilege to talk to you on this platform. Hopefully इंदौर में मिलेंगे बहुत ही जल्द कभी. Good. So now I will invite the director of our institute and who is also the patron of our college, Professor R.K. Saxena sir, to share his thoughts. जैसा मैंने बताया, sir is very passionate about this center that is being run under his guidance, that is Center for Innovation, Incubation and Design. So I'll just invite sir to share his thoughts. Yes, hello to everybody. Hello sir. Ashish, very nice to see you after a long time. Yes sir, absolutely. So nice to see you. Good, very nice. Presently, where are you? Sir, Geneva में, Switzerland में. Switzerland, good. Basically, sorry मैं लेट हो गया. मैं हॉस्पिटल किसी को देखने गया था, चेरक हॉस्पिटल में एक स्टूडेंट एडमिट था. अच्छा. तो उसको देख के और फिर मैंने दौड़ लगाई है प्रोग्राम में, तो थोड़ा लेट हो गया, तो शुरू से जुड़ नहीं पाया. सॉरी. बट सूर मैं चाहूंगा कि ऑनलाइन एक लंबी मीटिंग करना चाहेंगे हम संस्थान में, बिकॉज आई लिसन यू आर डूइंग वेरी गुड अप्रोच एंड वाइड बैंडविड्थ बहुत अच्छा है तुम्हारा. और जैसे तुमने कानपुर आईआईटी के डायरेक्टर का बोला, तो ही वाज माय जूनियर एट एमआईटी ग्वालियर, तो आई एम इन कांटेक्ट विद हिम. मैं उसके कांटेक्ट में हूँ करंदी करके, और वो जानता भी है, मेरी बात होती रहती है. कोविड के पहले हम जाने वाले थे हमारी पूरी टीम को लेकर के कानपुर आईआईटी, लेकिन कोविड में नहीं जा पाए. तो अब हम रिसेंटली हम लोग फिर जाने वाले हैं. हमारी 3-4 लोगों की टीम, हम लोग आईआईटी कानपुर जा रहे हैं. हम उससे मीटिंग भी करेंगे और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे. हाँ. अभी आपको बता दें, हमारे यहाँ CIDI है, डिजाइन सेंटर इनक्यूबेशन, जिसको गायबाग साहब उसके CEO हैं. ये 3 साल पहले चालू हुआ था. करीब 15 से 16 स्टार्टअप चल रहे हैं हमारे, जिसमें 2-3 तो कॉमर्शलाइज भी हो गए हैं, और एक अभी AICT से एक आइडिया लैब हमको मिला है, जिसमें 1 करोड़ हमको फंडिंग हुई है. तो वो लैब भी इसी से जोड़ दी गई है. तो स्टूडेंट्स अब भाई हमारे काफी मोटिवेट हुए हैं, जो स्टार्टअप में आ रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट पेटेंट क्या है, पेटेंट में आया है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसमें काफी हमने उन लोगों को लिया है. शिक्षकों को भी काफी इनकरेज किया है यहाँ आने के लिए. तो संस्थान में इस तरह की अदर एक्टिविटीज में काफी ज्यादा. एक SIF हमारा SJSITS इनक्यूबेशन फोरम है,
उसमें हमको 12A और 80G भी मिल गया है अभी। तो उसमें हमारा एलुमनी सपोर्ट बहुत अच्छा है, खासकर बॉम्बे चैप्टर बहुत सपोर्ट करता है और सभी लोग जुड़े हुए हैं उस चीज के लिए। तो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, बट आई नीड योर हेल्प विद बिल्कुल सर, डायरेक्शन, जो सके। विद सपोर्ट इन ऑल द वे, है ना, ये बहुत जरूरी है ना। और इंडिया कभी जब भी आओ तो इंदौर बिना GSITS घूमे जाना मत। हाँ सर, मैं एक्चुअली आया था जिनीवा जाने के पहले, मैं इंदौर आया था। मैं एक्चुअली उज्जैन गया, मैं महाकाल गया था, फिर ये मतलब तो महाकाल अभी तक हाथ में पहने हुए हैं। अरे बाप रे। महाकाल और खजराना वो क्या आया था उसके, लेकिन मैं 2 दिन के लिए आया था, मिल नहीं पाया, बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आऊंगा, पक्का मिलूंगा। हाँ, लेकिन रिंग कर देना कभी ऐसा हो तो हम मिलेंगे ना आपसे जहां भी हो। ऐसी हाँ, कोई बात नहीं है। सब आऊंगा ना, कॉलेज आ सकते बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सो नाइस टू सी यू एंड बहुत अच्छा लगा ये आपका सेशन। और मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी एलुमनी एसोसिएशन को कि जो हमारी यादों को ताजा करता रहता है, पुराने लोगों से मिलाता रहता है। और सब्जेक्ट तो एक बार में निकल गया था ना मेरा, और हाँ, प्रोजेक्ट। मुश्किल से निकला था, बट निकल गया था। नहीं, वही। चलिए चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सर। हमारी बेटी अभी जा रही है फ्रांस 1 मई को, वो अच्छा। वहां रहेगी। लेले कोई जगह है, एक इंडस्ट्री है 5G की, उसमें रहेगी। तो हम बीच में विजिट करेंगे तो शायद हमको आइए आपके फिर, आने का मौका मिल जाए। फ्रांस तो पड़ोस में ही है, बिल्कुल आइए, कभी भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So I'll surely come to you and I'll meet you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. And thank you, Aashish ji, for taking out so much time and talking to us. So it was a wonderful 1 hour, 1.5 hours that we spent with you and learned a lot of new things from you and very insightful session. थैंक्स आशुतोष फॉर इनवाइटिंग। एक रिक्वेस्ट है, चैट पे काफी सारे मैसेजेस थे विद कांटेक्ट नंबर वगैरह, इफ यू कैन जस्ट डाउनलोड द चैट एंड सेंड टू मी, Okay, sir. Okay. आई कैन कनेक्ट विद एवरीवन सेपरेटली। Yes, I'll do that. Chitragupt sir is saying the galaxy of alums is getting bigger and bigger, and kudos to such bright alumni. Yes, sir. Thank you, Chitragupt sir. So to present concluding remarks and to share his thoughts, I'll just invite Vikas sir to share his thoughts with us. Where is Vikas sir? Vikas sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes, sir. सभी को बहुत धन्यवाद जितने भी लोगों ने सुना आशीष को। और आशीष, इट वाज अ रियली नाइस टॉक एंड आपको मैं परेशान करता रहूंगा रेगुलरली मेल लिख के, नॉट फॉर मी बट इंस्टीट्यूट के लिए, हमारे सिटी के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर के लिए और गाइडेंस और सब चीजों के लिए। तो आई विल बी sending you mail on the regular basis. अपूर जी के पास भी काफी आइडिया है। हम और अपूर रेगुलर टच में रहते हैं और आपके जो फेवरेट प्रोफेसर हैं, तो हम लोग काफी टच में रहते हैं। तो वो भी आपको शायद परेशान करेंगे या मुझे बोलेंगे परेशान करने को, बट इट वाज नाइस हियरिंग यू। और आपके जो एक्सपीरियंस थे सबको अच्छा लगा होगा और होपफुली यूट्यूब पे भी लोग बाद में देखें। ये रहा है, अटेंडेंस कम रहती है बट बाद में यूट्यूब पे लोग काफी देखते हैं, तो उम्मीद है काफी लोग देखेंगे। और धन्यवाद आशीष, इतने बिजी शेड्यूल से सब निकालने के लिए। आई नो सरकार में कैसे काम होता है और कितना बिजी रहना पड़ता है आजकल, फिर भी इतना टाइम निकालने के लिए। और फिर आशुतोष तो मास्टर है हमारा, मास्टर ऑफ द सेरेमनी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। सबको धन्यवाद और शुभ रात्रि। थैंक यू विकास जी। Thank you Ashish ji, and thank you all the alumni for joining, and thanks to all of you who would be watching this episode later on YouTube. That's all we have for this month. Next month हम फिर से किसी और alumni के साथ connect करेंगे और जानेंगे उनके life experiences उन्हीं की जुबानी। Till then, have a good time and have a great weekend. Bye bye. Thank you once again. Bye.